Now let us start the exercise 8.2. Everyone is now there is four student and I think everyone is clear with midpoint theorem. Saloni, is there any problem in midpoint theorem or converse of midpoint theorem? Saloni, are you able to hear my voice? Okay, let us start one more time exercise 8.2 and then now I will, now the audio is there, don't worry about this. I will check one more time, okay, audio is there or not. Yes, audio is there, no problem. Now the audio is there, okay. Now start exercise 8.2, this is the revision for the exercise 8.2, let us start with question number 1. Now the question number 1 is, ABCD is a quadrilateral and PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA. Means there is a quadrilateral, कैसे भी एक quadrilateral हो सकता है and A, C and D, and then these are the four midpoints. The midpoints are PQRS and this is the given portion. Given portion is P, Q, R and S are the. Now please don't copy. Today I want ki no one copy in the classwork because this is already copied. ये किया हुआ है, don't copy. You can do this question in homework as revision. So you can repeat the all question from 1 to 7 in homework. Don't now just see and raise doubt or ask questions. PQRS are the midpoint to the respective sides. Then to construction is join midpoints. And we can draw a diagonal, join AC as a diagonal also. Join AC as diagonal. Now, if we start a proof, oh sorry, and at the top I have to write now what is अच्छा नहीं ठीक है. So to prove there is more than one proof. So first is SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. So now the proof start. If S and R are the midpoint, then SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC by midpoint theorem. Clear? Now for the second, PQ is equal to SR. We have to prove PQ is equal to SR. For this we say that P and Q are the midpoint. So PQ is parallel to AC and we can write this as a theorem equation 1. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of
AC. This is the theorem number 2, and this is by midpoint theorem. Okay. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, we get we get PQ is equal to SR. Now the second portion is clear. और एवरी टाइम देखो सोल्यूशन मेरा चेंज हो जाता है, यू कैन उसको तुम्हें देखना है, जस्ट यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, बिकॉज पहले मैंने इक्वेशन फॉर्म नहीं किया था बिफोर आई कैन डू विद अ सिंपल। तो अब अगर मैंने इक्वेशन फॉर्म नहीं किया था तो आई हैव टू राइट this SR is half of AC and PQ is half of AC. Then PQ SR is equal to this. If we write a equation 1 and 2, then we have to write from equation 1 and 2 we get PQ is equal to SR. Now it is clear. Now this is the equation number 3. This is the equation number 3. Now the third proof is to prove third part. Third part is PQRS is a parallelogram. Okay. So इसमें तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं. If we are writing equation, then we can just write from the equation blah blah blah. Okay. So from the equation, अब इसमें सीधा लिख सकते हैं, यही है इक्वेशन लिखने का सबसे बेस्ट, बिकॉज यही है इक्वेशन नंबर डालने का सबसे बेस्ट नहीं, टू सेव द टाइम बेसिकली. नाउ द फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get, अब now you see 2 is PQ is parallel to AC and PQ is equal to PQ is parallel to AC. No, it's, you have to write 1, 2 and 3 from equation 1, 2 and 3. Now from the equation 1, 2 and 3, so from the first equation यहाँ पर तो हमने इक्वल लिखा हुआ है, PQ is parallel to, अच्छा छोड़ो इसमें इक्वेशन नहीं लिखते हैं, PQ is parallel to AC and SR is parallel to AC. So therefore PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. और रीजन अमन ने बताया था लास्ट टाइम भी, इस बार भी बोलेगा. अमन बताओ क्या बोला था? Yes. Sir, please repeat your question. कहाँ चले गए थे तुम? Now PQ, अब रहने दो, it's okay. PQ is parallel to AC and SR is parallel to AC. So therefore PQ is parallel to SR. Line parallel to the same line are parallel to each other. This is the reason for Each this. other. This is Yes, the sir. reason for this, and we already proved PQ is equal to SR. So if the line is parallel and equal, then PQ RS SR is a parallelogram. parallelogram. Now finished. ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें मैंने एक इक्वेशन 1 में अगर मिटा दिया ना, अगर इक्वेशन 1 अगर मैं लिखा हुआ रहता तो मैं उसको वहीं पे ये चीज़ लिख के फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 कर लेता, बट वो मिट गया तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा लिख देते हैं. So now it is clear, question number 1. So you just see, don't Yes. write, just watch what we have to, how to use the midpoint theorem. And same you have to do in your homework. This week you have to submit exercise 8.2 again. ठीक है, पहले भेजा है 8.2 मेरे को, इस वीक भी भेजा है ना सबने? What is the last
last week homework? Exercise 8.2. Yes, sir. So Yes, Exercise 8.2, sir. 8.2 na. And sir, we solved one question. Okay, but you have to solve it again in your homework copy. And for this week, the homework is midpoint theorem, the converse of midpoint theorem, and exercise 8.2. And you have to write a revision. Clear? okay. Yes, sir. Now, how many students are there? Same So four? five. Five. The fifth Yes, one? sir. Who is the fifth one? So number of students have been increased. Number of? Number of student has increased. Who? Who in? क्या कौन आया क्लास में पता तो चले. No, sir. Last Zoom class we are having only 2 students, but today we are having 5 students. इसीलिए तो मैं एक्सरसाइज रिपीट कर रहा हूँ. So now the question number 2. Now the question number 2. ABC. Now the question number 2 is ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus and PQRS. Sorry. PQRS. PQRS R. फिर ये दोबारा से C आ जाता है यहाँ पर. और कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि इसको जो C को ना हम शो कहते हैं या बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये चीज कुछ मैंने एक दो जगहों पे नोटिस किया है. बाय कंस्ट्रक्शन मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड बी सी सी डी एंड डी ए शो दैट पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल. कहीं कहीं पे मैंने इसको देखा है, ये शो भी होता है शो, और समटाइम मैंने देखा है फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन होता है. और जैसे एट द रेट पी होता है, कभी सुना है एट द रेट सर्कल के अंदर पी को कभी देखा है? Yes, ऐसा sir. In the ऐसा book, देखा है. NCERT book. हाँ, तो इसका मतलब होता है रिकॉर्ड साउंड. ये रिलेटेड टू साउंड होता है. ये रिलेटेड टू साउंड होता है. अब ये सी समटाइम सर्कमफेरेंस को भी करता है, बट इन क्वाड्रिलेटरल इट मे बी बाय कंस्ट्रक्शन. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. अभी तो मैं सर्च ही कर रहा हूँ. कुछ चीज़ें मैंने सर्च की थी तो मैंने बता दिया तुमको. नाउ So C means, sir. कॉपीराइट भी होता है और उसके बाद बाय कंस्ट्रक्शन भी होता है या थ्रू कंस्ट्रक्शन. So now these are the midpoint. We just join it, and now we have to prove PQRS is a rectangle. ठीक है, तो इसमें अगर तुम चाहो तो यू जस्ट ड्रॉ वन, और दूसरे के लिए हम सिमिलरली लिख सकते हैं. So to prove ABCD is a rectangle given, sorry, to prove PQRS is a rectangle given ABCD is a rhombus. Okay, and these and PQRS are the midpoint with their respective sides. Okay, now given is this, now proof. We can write in triangle ACD. In triangle ACD, or first we write ACD, then we second one, or if you want to ACB से start करना है तो you write with ACB. Now P and Q are the midpoint. So, PQ is parallel to AC
and PQ is equal to half of AC. This is by midpoint theorem. Okay. Now in triangle, now this is the equation number 1. In triangle ACD, S and R the midpoint. इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, तो you can write the construction by your own. Midpoint. So SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. This again by the midpoint theorem, and this is the second equation. Okay, this is the second equation. Now from equation 1 and 2 we get PQ RS is a equal to a is parallelogram. equal to S. What do you say? From equation 1 and PQ 2, equal to नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है. It's not required. First we have to prove the this PQR is a parallelogram. Clear? PQR is a parallelogram. Now अभी parallelogram prove कर दिया है और हम इसमें इस डायगोनल को ज्वाइन करके इनके ट्राइंगल्स को, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर, उसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम इसमें एडजेसेंट साइड को इक्वल बना देंगे. बस इतना ही हमें करना है. तो अब मैं एक बार यही सोच रहा हूँ कि इसके एडजेसेंट साइड को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँ. ठीक है, यहाँ पैरेललोग्राम तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? कोई यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो मुझसे. यहाँ तक हम पहुँच गए कि अब ये पैरेललोग्राम हो गया. पी क्यू एस आर इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम के बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दिस इज इक्वल. ओके, एंड नाउ वी कैन मार्क ओ. एंड फॉर दिस कोई बताओ मुझे एक्स वाई जेड डब्ल्यू. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. डब्ल्यू एक्स वाई और जेड. ठीक है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने से अच्छा है कि हम इस ट्राइंगल में ये जो हमारा यहाँ पर है, इसको भी अगर हम प्रूव कर दें पैरेललोग्राम, तो फिर ये यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा. इज इट बी क्लियर? बिकॉज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन rhombus. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछो. क्या I need कि everyone want explanation for anything. So now we have to prove this small one. This मैं इसको इधर अलग से बना देता हूँ. ये अब हम इस छोटी सी चीज को प्रूव करेंगे. O W P B is a parallelogram. हम इसे प्रूव करेंगे. This figure is a parallelogram. So एवरीवन लिसनिंग मी और नॉट? किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो वो मुझसे पूछे, बोले. नाउ वी हैव Listening, टू sir. प्रूव. Yes, sir, was audible. ओके, माधव यू आर एब्सेंट टुडे. व्हाई इन स्कूल? चलो, तो now we have to prove this is a parallelogram. Now how do we prove this parallelogram? See, this is parallel to, we know that for this PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. So it means that ki this portion is also then PX is also parallel to नहीं, इसको ऐसा नहीं लिखते.
AC. PQ is parallel to AC लिखते हैं. Now PQ is parallel to AC, so it means that PQ is parallel to W. Now this is parallel to this. Clear? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? No, sir. गुड. अब अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर चले जाते हैं, इट मींस दैट इफ दिस इज अ मिड पॉइंट एंड दिस इज पैरेलल, नाउ P is a midpoint, P is a midpoint and PX is parallel to WO. और अगर हम उसमें A भी लिखते ना तो भी चलता, PQ is parallel to AC लिखते तो भी चलता. यहां तक क्लियर है? P is a midpoint and Yes, sir. PX is parallel to this. PX is parallel to WO and P is a midpoint. So therefore, X is also a midpoint. Yes, sir. Yes, sir. Reason. कौन बताएगा? दो आदमी नहीं बोलना, ब्रज और ब्रज. जिसको मालूम है वो नहीं बोलना, जिसको नहीं मालूम है वो बोलना. ब्रज तुम ही बताओ क्या मालूम है तुम्हें? ये क्या नाम है? क्या था उसका नाम जिससे पूछ. एक सेकंड वेट करो. मैं So what is your question? My question is, you can see the board here, please. Ayushi Saloni. Ayushi, can you please answer me? यहाँ पर देखो, अब मैं इसे पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मैंने ये लिखा कि PQ is parallel to AC. PQ is parallel to AC.